यार उस्मान, तुम भी मेरा ख्याल है लिंक शेयर कर देना। ठीक है गाइस, थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं फिर स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट आयशा, मैं आपके लिए भी अलाउ कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज आयशा खान। नो इश्यूज आयशा। ठीक है यार, सो फॉर टुडेज क्लास आयशा खान इज रिकॉर्डिंग, मोहम्मद उस्मान आई बिलीव इज रिकॉर्डिंग, और अली असगर भी रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि वो आ जाएं। दे आर स्टिल एडमिटिंग, तो थोड़ा सा रुकता हूँ फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़ैनब, आई गेस इस मंथ पे तो आई वुड रादर वांट के ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू करूं, एंड देन लेट्स सी कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। बिकॉज जहां जहां पर भी खोल रहे हैं ना, वहां पर आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग कि यार रिजल्ट्स खराब होते जा रहे हैं। एटलीस्ट फॉर दिस मंथ तो आई जस्ट कंटिन्यू ऑन विद द ऑनलाइन क्लासेस, फिर आगे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। हाँ, आई गेस उस्मान यू आर राइट, सिचुएशन इज प्रॉब्ली गेटिंग अ बिट वर्स। ऑल राइट, सो आई बेटर गेट स्टार्टेड, फिर बाकी लोग आई थिंक ज्वाइन इन कर जाएंगे। तो यार, प्रीवियसली वी कंक्लूडेड द वर्किंग ऑफ एसएचएम। सो वी डिड सर्कुलर मोशन किया था, फिर ग्रेविटेशन किया था, फिर एसएचएम कर लिया था। सो अब वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक विच इज थर्मल फिजिक्स और हीट। तो आज वाली क्लास में इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी यार। So यार, within the topic of heat there are multiple subtopics. So in today's class, I'll start with the first one, which is gas laws. Now, since a large portion of A2 students kind of take chemistry as well, so gas laws, as you would see in this topic, ये आपकी AS chemistry related है. So in fact, आई थिंक आपने ये सारे फॉर्मूलाज AS में किसी ना किसी स्टेज पे किए हुए होंगे, तो मैं क्विक रिकैप पहले करा देता हूँ उन सारे फॉर्मूलाज का, और फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह भी अभी अटेम्प्ट कर लेंगे। सो यार, क्या क्या डिस्कस करना है उसकी एक बेसिक वर्किंग बता दूं। सो यार, गैस लॉज के अंदर द फर्स्ट वर्किंग कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बॉयल्स लॉ। With regards to Boyle's law, the pressure of a gas is known to be inversely proportional to its volume, provided that the temperature remains constant. Now, since Boyle's law takes into account constant temperature, which is why Boyle's law is said to be an example of an isothermal change. Iso coming from the word same, thermal referring to temperature. So since the temperature remains constant, therefore Boyle's law falls under the category of an isothermal change. If you simplify the relationship, you will end up getting any one of these answers. I'm hoping कि शायद AS में किए हुए हैं.
So you can either write down the result in this manner, or alternately you can say PV is equal to K. And most of you would remember from O levels, इसका formula आप लोग O levels के अंदर करते थे. And this was the relationship. यहाँ से याद भी आ जाएगा, P1 V1 is equal to P2 V2, where P1 and V1 represents initial pressure and initial volume, and P2 V2 represents final pressure, final volume. रोहिल ने लिखा है सर आइडियल गैस वाला है ना. हाँ, सो आई थिंक एएस केमिस्ट्री के अंदर आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर ये सारा कुछ पढ़ते थे. ऑल राइट, इसके ग्राफ्स भी बनाने हैं. So since pressure and volume are classified to be inversely proportional, so this would be the shape of the graph. Similarly, if you plot a graph of pressure against 1 upon volume, so this would be a direct relationship. So the graph would be a straight line. And if you plot a graph of pressure into volume on the y-axis against either pressure or volume on the x-axis, then based on the above statement, since pressure into volume is a constant, therefore the graph is a horizontal line ठीक है. सो बॉयल्स लॉ की इंटरप्रिटेशन आपको ओ लेवल्स वाली थी, वो याद होनी चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए, और फाइनल फॉर्मूला याद होना चाहिए. हाँ, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्डिंग सही है. मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट वाली वर्किंग है, this comes under the heading of Charles' law. According to Charles' law, volume of a gas is directly proportional to its thermodynamic temperature. Does anyone know the meaning of the term thermodynamic temperature? तो वो मैं साथ पे लिख दूं. So the term thermodynamic वर्डिंग साथ साथ रीड कर लेना. ठीक है. So the terminology for Charles' law is volume of a gas is directly proportional to temperature के बजाय thermodynamic temperature, where the term thermodynamic in physics is used to identify temperature, which is measured in Kelvin scale. So based on this, your relationship can be expressed as follows. So volume is directly proportional to
thermodynamic temperature. This time around, the pressure is supposed to remain constant. So such cases कि जहां पर आपका pressure constant रहता है, physics के अंदर such changes are referred to by the term isobaric change. Iso again referring to the term same, and baric comes from the word bars, and bars are units of pressure. So previous occasion पर the temperature was constant, hence the change was referred to as isothermal change. In this case, pressure is constant. So this law is referred to as an example of an isobaric change. Iso referring to the term same, baric coming from the word bars, which is a unit of pressure. Aisha, just give me a minute. मैं एक चीज यहाँ पे जरा कंक्लूड कर लूं, फिर मैं स्क्रॉल अप करता हूं तो आपको मिल जाएगा कि मैंने क्या मिस किया. Just give me another couple of minutes, beta. Now, if you simplify this relationship, when you remove the proportionality sign, तो यार आपके पास एक constant आ जाएगा. So the relationship can either be written in this form, V is equal to KT, or alternately, V upon T is equal to a constant. As far as the formula is concerned, so for Charles' law, we write down the formula as follows. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Before I scroll up, मैं इसके graphs भी बना दूं. So imagine if I were to make an attempt to plot a graph for volume against temperature. तो यार ग्राफ के अंदर आपको दो चीजें recognize करनी है. Firstly, if you plot a graph of volume against temperature, where the temperature is measured in Kelvin scale, then based on the relationship, you would expect the graph to be a straight line passing through the origin, because the statement was that the volume of the gas is directly proportional to its thermodynamic temperature. So as long as you take the value of temperature in Kelvin, then due to direct proportionality, the graphical representation for Charles' law will be a straight line passing through the origin. However, ये आप लोग केमिस्ट्री में करते थे. I'm sure last year किया था कि if you are asked to plot a graph for volume, but if this time around the temperature, instead of being in Kelvin, if the temperature is in degrees Celsius, तो ये काम तुम लोग केमिस्ट्री में करते थे कि the graph will still be a straight line, but instead of passing through the origin, the graph will now have a y-intercept. So this is how the shape of the graph would look like. And you were also taught in AS chemistry, if you extrapolate this graph, तो अगर आप इस ग्राफ को extend करोगे until the graph meets the x-axis, तो वो जो x-intercept वाला point है, which I have shown you with the green marker from AS chemistry, most of you would recall कि आप लोग इस वाले point का नाम रखते थे as absolute zero temperature, that is basically 0 Kelvin. Now, essentially this name of absolute zero temperature, इसकी कोई relevance नहीं है physics के अंदर at least. But ये कि since most of you have done this term of absolute zero temperature in your AS chemistry, hence मैंने यहाँ पे mention कर दिया.
फिजिक्स के अंदर व्हाट मैटर्स इज ये बस आपको कन्वर्शन याद होनी चाहिए. सो वो भी आई थिंक केमिस्ट्री में करी थी कि इफ यू आर आस्क्ड टू लेट्स से कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो आई थिंक आपको याद भी होगा केमिस्ट्री में आप लोग यही करते थे कि 27 प्लस 273. सो केल्विन के अंदर योर रिजल्ट यूज टू कम आउट टू बी 300 केल्विन फॉर एग्जाम्पल. फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट बस ये है कि if you are asked for the conversion, so this is how the conversion is done. कि केमिस्ट्री के अंदर हम राउंडेड ऑफ वैल्यू को यूज करते थे और फिजिक्स के अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज करते हैं. तो 273 के बजाय फिजिक्स के अंदर कन्वर्शन की जो ट्रू वैल्यू है फ्रॉम डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, that is 273.15. So the result instead of being 300 turns out to be so whenever the examiner in physics uses the term give your answer to a suitable number of decimal places, है ना, क्वेश्चन में किसी जगह मेंशन्ड हो कि give your answer to a suitable number of decimal places, then the examiner wants you to use this complete conversion, that is 273.15. But if the question does not mention anything about decimal places, then you can ignore the 0.15 और फिर वो जो केमिस्ट्री वाला राउंडेड ऑफ आंसर था आपका उससे भी काम चल जाएगा. ठीक है. सो द फर्स्ट वर्किंग वाज विद रिगार्ड्स टू बॉयल्स लॉ. सेकेंड वाला रिजल्ट जो अभी हमने लिखा था दैट वाज फॉर चार्ल्स लॉ. टेम्परेचर एज आई सेड must be thermodynamic temperature, which means temperature must be measured in units of Kelvin. और कन्वर्जन मैंने आपको फाइनली बता दी है कि the absolute conversion is instead of adding 273 it should be 273.15, which is the exact value. But the exact value is of relevance only if the question mentions you to give the answer to an appropriate number of decimal places. So if the question mentions that term, तब exact value use कीजिएगा. Otherwise rounded off result of 273 kind of makes sense. सही. So मुझे एक point और भी include करना है before I scroll up. So वो जो आयशा ने मिस आउट किया था मैं अभी मूव कर जाता हूँ, बट पहले एक स्टेटमेंट फर्दर इंक्लूड कर दूं. रोहिल तुम्हारा स्टेटमेंट सही है और कुलसुम ने लिखा हुआ है कि यार विच टॉपिक आर वी डूइंग. सो कुलसुम हम लोगों ने आज वाली क्लास के अंदर हीट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है. सही. और मैं कुलसुम अभी आयशा ने भी थोड़ा सा मिस कर दिया था. सो इन अ कपल ऑफ मिनट्स मैं टॉप पे शिफ्ट कर दूंगा. सो अगर आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह चाहिए हो तो ले लीजिएगा, वरना खैर वैसे सिर्फ रीड थ्रू कर लेना. वैसे तो खैर मैं लेक्चर को अपलोड कर दूंगा. मुझे एक फर्दर पॉइंट लिखना है बिफोर आई स्क्रॉल अप. सो in the exams if they ask you ये क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ थ्योरी में आता है. what are the properties of thermodynamic scale. तो कोई दो तीन प्रॉपर्टीज लर्न कर लेना. यूजली दो या तीन से ज्यादा पूछते नहीं है. मैं एटलीस्ट चार लिख लेता हूँ फिर जो आपको सूट करे. ये आप खुद ही रीड कर लीजिएगा while I'm writing it down.
हो सके तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई टॉप 3 या जो भी आपको सही लगता है। यूजली 2 से 3 प्रॉपर्टीज पूछते हैं। सो ठीक है यार, मैं क्विकली जरा टॉप पे चला जाऊं ताकि 2-3 लोगों ने कुछ काम मिस किया हुआ था ना, सो दे कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। ठीक है, सो कुलसुम एंड आयशा, वी स्टार्टेड विद द वर्किंग ऑफ थर्मल फिजिक्स। हमने गैस लॉ स्टार्ट किया। उसमें से द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन वाज बॉयल्स लॉ। आई हैव रिटन डाउन द रेलेवेंट स्टेटमेंट्स इन द ग्राफ, और साथ में मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूले का राउंड बॉक्स बना देता हूँ। इनफैक्ट यू वुड रिमेंबर दिस रिजल्ट फ्रॉम ओ लेवल्स एज वेल। ठीक है, देन द नेक्स्ट वर्किंग वाज बिफोर यू गाइस जॉइंड इन, आई बिलीव, द वर्किंग फॉर चार्ल्स लॉ। सो अगेन आई रोट डाउन द स्टेटमेंट एंड द प्रॉपर्टीज, और इसका भी फॉर्मूला सजेस्ट कर दिया था। और इसके ग्राफ्स भी कंस्ट्रक्ट कर लिए थे। ठीक है, वी ऑल्सो डिस्कस कि यार कन्वर्जन कैसे करनी है फ्रॉम डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, सो दैट इज अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। और लास्टली वी वर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल। सब और आगे प्रोसीड करता हूँ यार। यू आर वेलकम कुलसुम। नेक्स्ट वर्किंग, प्रेशर लॉ। The pressure of a gas is directly proportional to its, again the same terminology, thermodynamic temperature, which means the relationship can be expressed as follows. And this time around, the volume is supposed to remain constant. So such cases which fall under the category of pressure law, where volume is supposed to remain constant, they are generally referred to by the term isovolumetric changes. So first wala case was Boyle's law, that was isothermal. Second wala case was Charles' law, that was isobaric because out there pressure was constant. And the last wala case, pressure law, इसमें volume constant है, hence the term isovolumetric. So if you simplify this, तो यार प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो वंस अगेन आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा. सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट डाउन. ऑल्टरनेटली P अपॉन T इज इक्वल टू K. और यार यहां से जो फाइनल फॉर्मूला आपका बनेगा दैट विल बी P1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 अपॉन T2. फॉर्मूलास के साथ बॉक्स बनाते जा रहा हूं. आई एम होपिंग कि मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली वुड नो दीज फॉर्मूलाज, किसी ना किसी स्टेज पे पहले किए हुए थे. Some of them were done in physics as well. As far as the graphical representation is concerned, so if you plot a graph of pressure against temperature, once again, temperature must be in Kelvin scale for this relationship. So based on direct proportionality, you would expect the graph to be a straight line once again. ठीक है, अब इसके बाद further on proceed करते जा रहा हूं. सही, जो fourth वाला scenario है, that is referred to by the term universal gas law. इसकी wording देख लीजिएगा.
ठीक है, so from the wordings, a universal gas law is basically a combination of Boyle's law, Charles' law, and pressure law. So all three individual laws combined together results in the formation of universal gas law. So यार इसका result हम ऐसे लिखते हैं. Or alternately, if you look at the result, the first result, I think you should be able to recognize that the universal gas law is actually a combination of all the three laws. Let me just mention that. जो मैंने ग्रीन से बनाया है ना, चेक कीजिएगा, ये आपके बॉयल्स लॉ की इंटरप्रिटेशन है, द वन शोन विद द ग्रीन मार्कर. जो ब्लू से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, दिस इज द रिजल्ट दैट वाज जनरेटेड यूजिंग चार्ल्स लॉ. तो ये सेकंड चीज हो गई. और जो ब्लैक से बना रहा हूं, that was the result interpreted from the third, that is pressure law. So basically, universal gas law is an intercombination of all the above three results into a single equation. So the final form can either be remembered as PV upon T is equal to K, or alternately P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Final result. ये फिफ्थ वाला रिजल्ट हम लोगों ने केमिस्ट्री में किया हुआ है. आइडियल गैस इक्वेशन. सो ये भी साथ साथ मेंशन कर दूं. फॉर दोज ऑफ यू हैव डन केमिस्ट्री इन एएस, उनको याद भी होगा, और जिनके पास केमिस्ट्री नहीं होना, मैं सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर लेता हूं. So the final result, that is ideal gas equation, can be interpreted as shown. So apart from pressure, volume and temperature, बाकी के symbols भी साथ साथ लिख लूं, वो आपने केम में किए भी थे. So N represents, साइड पे लिख लेता हूं, एक सेकेंड, क्योंकि I'll need this space for the working. So N represents आप लोग नंबर ऑफ मोल्स बोला करते थे, और R was a constant. आई एम श्योर पूरा नाम भी आपको याद होगा. So R was referred to by the term universal gas constant. इसकी वैल्यू भी आप लोग केम में पढ़ते थे. So R has a constant value, probably याद भी होगी, 8.31. हाँ जी, सिर्फ 8.31 रोहेल चाहिए होती है. सो 3SF से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है. इसकी यूनिट्स किसी को रिकॉल हो रहे हैं? क्योंकि एएस केमिस्ट्री में यूनिट्स भी मिलते थे आपको, शायद किसी को याद हो. आई एम होपिंग किसी ना किसी को तो याद होंगे, अदरवाइज फिर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू तो याद होती है आपको 8.31. यूनिट्स आई थिंक आप लोग नहीं पढ़े थे. ओके, मेरा ख्याल है पढ़े थे, लेकिन मैं लिख देता हूँ. सो द यूनिट्स फॉर आर इज, नहीं पैस्कल्स नहीं है, इट्स जूल्स. मैं लिखूंगा तो हो सकता है याद आ जाए आपको. पर केल्विन, पर मोल. हाँ, आयशा ने सही सजेस्ट किया है. सो इट्स जूल्स पर केल्विन पर मोल. यूनिट्स कैसे आए ना, हाउ डिड वी गेट द यूनिट्स, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. तो यार ये यूनिट्स अराइव कैसे होते हैं ना, बहुत सिंपल है.
इफ यू लुक एट द इक्वेशन, आई थिंक आप खुद ही रिकॉग्नाइज देखें कैसे करेंगे कि यूनिट्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं. Let me write down pressure as force upon area. मैं O levels वाली वर्किंग कर रहा हूँ. And let me write down volume as base area into height. I'll copy down the right hand side as it is. Keep in mind कि आपको R के यूनिट्स कैलकुलेट करना है, तो मैं R को रेड से शो कर देता हूँ. ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनेगा. एरिया एंड एरिया विल गेट कैंसल्ड. फोर्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय h. अगर आप h को हाइट के बजाय थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस अज्यूम कर लो, so then I guess you would all agree that force multiplied by, if I were to consider h not as height but rather as distance for your simplification, so force times distance will be work done. So work done का मतलब है जूल्स तो यहां से आ जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप h को हाइट के बजाय डिस्टेंस अज्यूम कर लो, तो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस ओ लेवल्स के अंदर वर्क डन होता था. सो ये जूल्स बन जाएंगे आपके. मैं मेंशन भी कर दूंगा वर्क डन का टर्म. ठीक है, राइट हैंड साइड पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को. R के यूनिट्स आपको फाइंड करने हैं, तो आई लीव इट एज इट इज. और T डिनोट्स टेम्परेचर, सो वो आपके पास केल्विन में है. सो आई थिंक अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर शुड वर्क आउट टू बी जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है जनाब. रोहेल, तुमने भी सही लिखा हुआ है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज जूल्स, और मैंने भी वही चीज मेंशन करी हुई है. नाउ फर्दर आगे दो चीजें पहले डिस्कस करूं, फिर थोड़े से इसके क्वेश्चंस की वर्किंग करा देता हूं. सो पहली चीज तो यार ये है कि हाउ डू वी डिफाइन द टर्म आइडियल गैस. दिस डेफिनेशन इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जो ए लेवल्स में फिजिक्स में पूछते हैं. सो ये तो आपको शायद याद वैसे भी होगी थ्रू केमिस्ट्री, और मैं दोबारा लिख भी देता हूँ. सो एनी गैस which follows the relationship PV is equal to nRT for all values of pressure, volume, and temperature. Okay, so this definition kind of works for an ideal gas from the physics perspective. So any gas which follows the relationship PV is equal to nRT for all values of pressure, volume, and temperature is stated to be an ideal gas. Acha, Reha, sir, you have just done basic until now. Reha, I've done, we started with Boyle's law, फिर इसके बाद चार्ल्स लॉ किया, प्रेशर लॉ किया, यूनिवर्सल गैस लॉ किया, और सबसे आखिर में आइडियल गैस इक्वेशन करी.
सही है, and I'm just moving on to the definition of ideal gas before you joined. No issues बेटा. और इसके बाद यार एक चीज और रह गई है, and that comes under the heading of so again for those of you जिन्होंने कैम किया हुआ था उनको एएस केमिस्ट्री से याद होगा कि you were taught a series of basic assumptions regarding properties of ideal gases under the heading of kinetic theory of gases. So वो जो AS chemistry में assumptions वगैरह करी थी, that is also a part of your A2 physics syllabus. So let me quickly go through with that portion which comes under the heading of kinetic theory of gases. फिर इसके थोड़े से questions करा के आगे proceed करता हूँ. See, so instead of me writing them down, what I'll do is कि मैं ये वाली heading यहाँ से remove कर देता हूँ और मेरे पास slide की form में पूरी wordings लिखी हुई है. So मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, I'll just shift on to that slide और मैं आपके लिए read out कर देता हूँ. Most of you from your knowledge of AS chemistry would tend to remember these pointers. मैं read through कर लूँ, याद भी आ जाएंगे. So kinetic theory of gases refers to a set of basic assumptions in relation with the properties, movement, and behavior of ideal gas molecules. These assumptions are as follows. So possibly याद भी आ जाएंगे. First वाला था gas molecules are in continuous random motion. Second वाला आप लोगों ने किया हुआ था there are zero intermolecular forces of attraction between ideal gas molecules. Third वाला, ये third वाला I think रोहान ने भी mention किया था. Volume of gas is negligible as compared to the volume of the container. Or fourth and final one, gas molecules perform perfectly elastic collision with the walls of the container. So basically यही वो चार sets of basic assumptions हैं with regards to the properties, movement and behavior of ideal gases that were done under the heading of kinetic theory of gases in AS chemistry. So यार ये भी काफी frequently आपके papers में पूछते हैं. So at least set of basic assumptions learn कर लीजिएगा. So अब मुझे यार थोड़ा सा ये जो formulas कराए हैं ना इनके जरा एग्जाम्पल्स कराता जाऊं ताकि एटलीस्ट वी नो कि यार हम लोगों ने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज कैसे करना है. सो लेट मी मूव ऑन टू द एग्जांपल क्वेश्चंस बिफोर आई प्रोसीड फर्दर. ये हाइलाइटेड लाइंस में इरेज कर देता हूं. ऑलराइट, सही. सो वी हैव डन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, उसके बाद यूनिवर्सल गैस लॉ, फिर उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन कर ली, एंड फाइनली वी हैव गॉन थ्रू the set of basic assumptions with regards to the property, behavior, and movement of ideal gas molecules under the heading of kinetic theory of gases. तो अब इनकी एप्लीकेशन कर लेते हैं. Assumptions प्लीज लर्न कर लीजिएगा. ठीक है यार, थोड़े से क्वेश्चंस की वर्किंग पहले कराता जाऊं फिर आगे थ्योरी देख लेंगे. मैं रीड थ्रू कर लेता हूं, आप लोग जरा मेरे साथ साथ स्टेटमेंट्स फॉलो कर लेना. The air in a car tire has a constant volume of so and so. Volume should be in meter cube, which it is. ठीक है, तो यहाँ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. The pressure of this air is so and so pascals at a temperature of so and so degree Celsius. तो पहला काम ये कर लीजिएगा, टेम्परेचर कन्वर्ट कर लीजिएगा. So 17 degree Celsius amounts to 290 Kelvin.
ठीक है, if you look at the question, मैंने rounded off value use करी है because the question nowhere expects me to pay attention towards the number of decimal places. So hence I've just used the same value जो chemistry में आप use करते थे, which was 273. The air may be considered to be an ideal gas. So first part में they're asking you for the definition of ideal gas. अभी थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी, बस notes mention कर देता हूँ. Previous वाली slide से फिर आप देख लीजिएगा उसको. Next part में they're asking you calculate the amount of air in moles in the tire. So now you can make use of the ideal gas equation. So you have the pressure and the volume and the temperature as well. Temperature मैंने convert करके ऊपर लिख दिया था. R की वैल्यू भी मैंने स्टेट कर दी थी previously, so that was 8.31. है ना? So बस लिख देता हूँ, numbers आप plug in कर दीजिएगा. I'll just write down the statement. Simplify to find n. Since I have the answer, I'll just directly copy it down. ठीक है. Next part देख लीजिएगा. The pressure in the tire is to be increased using a pump. On each stroke of the pump, 0.012 moles of air is forced into the tire. So with each single stroke of the pump, we are going to introduce 0.012 moles of air into the tires. They are asking us to calculate the number of strokes of the pump required to increase the pressure to a value of so and so at a temperature of so and so. So how many strokes of the pump are going to be needed in order for the pressure to increase to this new value and the temperature to increase to 27? Approach कैसे करेंगे ना वो देख लेते हैं. The first thing to recognize is I have the new value of pressure, 3.4 times 10 to the power of 5. I have the new value of temperature as well, 27 plus 273, that's 300 Kelvin. And regarding volume, let me go back to the first line where the question mentioned this term. जरा देख लीजिएगा wording को. It says constant volume. So volume की value की जरूरत नहीं है because the volume based on the question remains constant. So I'll use the same value of volume because it remains constant. Top पर से देख लेना. Just be careful of the fact that volume should be in meter cube. Otherwise आपको convert करना पड़ेगा. हाँ जी, अब पहला काम मैं ये करता हूँ कि let's apply this formula PV is equal to nRT to find, sorry यार, एक सेकेंड ना. Apply PV is equal to nRT to find, oh sorry yaar, to find ठीक है. तो you have the pressure, the volume and the temperature. Use these given values, apply them in the formula to calculate the new number of moles. I have the answer written with me. तो ये आपकी number of moles की new value आ जाएगी. And the question was asking you with each stroke 0.012 moles of air was forced into the tire. Part C, second line, with each stroke
0.012 moles of air was forced into the tires. And the question was asking us how many strokes are going to be required. So डायरेक्ट लिख देता हूँ. एक सेकेंड दीजिएगा, मैं निप को जरा थिन कर दूं. Okay, so it should be the new number of moles minus the previous number of moles. देखिए क्वेश्चन की वर्डिंग के साथ मेरी वर्किंग को प्लीज आप जज कर लीजिएगा. जी मोहित, कुछ कह रहे थे? सॉरी, मैंने कुलसुम, हाँ यार, आई रियलाइज कि मैंने 10 का पावर गलती से -3 लिख दिया है. चेंज कर देता हूँ. रिहा एक सेकेंड ना. Reha, let me read the statement once again. So, yeah, it said the pressure in the tire is to be increased using a pump. Then it further stated, on each stroke of the pump, 0.012 moles of air is forced into the tires. So the extra number of moles that are going to enter because of the stroking action. So yeah, extra number of moles nikalne ke liye, I need to go through the subtraction wali working first. So final number of moles minus the initial number of moles should give me the extra number of moles that were introduced. Hence, I went with the subtraction part first. And then I divided Reha by 0.012 so as to find out exactly how many number of extra strokes are going to be needed in order to reach the new values. Okay, okay. So Reha, I can continue now. You're okay with this working? ठीक है. All right. So यार अब एक और working देख लेना. मोहित, तुमने कुछ सर लिखा था and then you stopped. So मोहित भाई, can I continue या otherwise कुछ बता दो? So guys, just hold on a minute. Okay, I got it. ठीक है जी. Wordings देख लेना. No issues, Mohit. So here it says an ideal gas occupies a container. Acha, this time the volume is given to you in centimeter cube. So before I get started, conversion मैं भी कर दूं. So यार volume का result ये हो जाएगा. ठीक है, you guys are okay? मैंने 10 का power change कर दिया है ना? मैं लिख दूं. I'm hoping कि वैसे तो सबको पता होगा. So on the basis of this conversion, I've written down the value of the volume after it has been converted into units of meter cube. मैंने conversion भी नीचे mention कर दिया just in case अगर आपको चाहिए हो. ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम सही बता रहे हो रोहिल, मैंने अभी रीड किया है. तो वॉल्यूम आपके पास गिवन है, प्रेशर की वैल्यू इज आल्सो गिवन एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन. सो यहाँ पर आई कैन जस्ट डायरेक्टली कंटिन्यू. फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग अस, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री की वर्किंग करनी पड़ेगी. शो दैट, एक सेकेंड ना, द नंबर ऑफ एटम्स विल अमाउंट टू दिस वैल्यू. ठीक है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउट द नंबर ऑफ एटम्स. सो अगेन पहला काम तो ये कीजिएगा,
use PV is equal to nRT to find the number of moles. Number of moles का मेरे पास जो आंसर है that is 0.47. फिर सेकंड पार्ट के अंदर, और ये काम तुम लोग केमिस्ट्री में करते थे, कि नंबर ऑफ एटम्स will be equal to number of moles multiplied by Avogadro's constant. If you guys are okay with the symbols, so number of moles times Avogadro's constant should give you the number of atoms, which in this case amounts to the value that is given at the top. Okay, so उमर ने लिखा है, आई डोंट नो उमर क्या लिखा है, लेकिन अगर तुमने समझ लिया है तो मुझे ओके कर दो, और अगर कुछ क्वेश्चन है उमर तो बेटा बता दो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूं. ऑल गुड, सही है जी. तो यार बस जरा सिंबल्स का थोड़ा सा ख्याल रख लेना. आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर कि केमिस्ट्री में तुम लोग क्या सिंबल्स यूज करते थे, बट फिजिक्स के अंदर स्मॉल एन गोज विद नंबर ऑफ मोल्स, and capital N with capital A goes with Avogadro's constant. ठीक है जनाब. Next part में it says atoms of a real gas each has a diameter of so and so. So before I continue पहले मैं रेडियस लिख लूं. यार हाफ करेंगे ना तो रेडियस का ये अमाउंट आ जाएगा. Sorry यार. And the question is asking you, estimate the volume occupied by these many atoms. See, so they have given you the diameter of one atom, and they are expecting you to calculate the total volume that is going to be occupied by these many atoms. So, दो steps में कर लेना. Start with this working. Volume of each atom should be 4/3, assuming that the atom is spherical in shape. 4/3 pi r cube. तो यार यहाँ से मैं वर्कआउट करके पहले वॉल्यूम ऑफ ईच एटम निकाल लेता हूँ. इसका ये रिजल्ट है. हाँ रोहान, तुम्हारे नंबर में 9 की जगह 8 आना चाहिए था, बाकी तुमने सही लिखा हुआ है. और यार वंस यू हैव द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, then to calculate the total volume, it should be the volume of each atom multiplied by
the number of atoms. ठीक है, so applying the formula for volume of a sphere gives us the volume of each atom. That's the working shown with the green marker. And then to calculate the volume occupied by so and so atoms, further multiply करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. I have this result, तो ये भी मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ. हाँ जी कुलसुम, आई थिंक 2.5 और 2SF पे लिख दीजिएगा तो 2.5 बन जाएगा टाइम्स 10 to the power of -7. मैं एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर इरेज कर रहा हूँ. शी हैज गिवन द आंसर इज 2.5, सो माइट एज वेल वही लिख लेता हूँ. सॉरी यार, इट्स रोहेल, माय बैड. ओके, लास्ट वाले पार्ट के अंदर यार दे आर सेइंग कि by reference to your answer in part 1, suggest whether the real gas can be approximately treated to be similar to an ideal gas. So based on the answer that we have worked out, they are asking us, can we treat the nature of this gas as an ideal gas? Iska suggestion dena hai. Now, before I read the answer, just a while back when I was reading the kinetic theory of gases, so let's just emphasize on this statement. Now, one of the properties regarding ideal gases was that the volume occupied by the gas should be negligible as compared to the volume of the container. And so if I go with this wording, the gas volume should be negligible as compared to the volume of the container. Let's see, is this property getting satisfied or not? So आप जरा numbers देख लीजिएगा कि मेरे पास क्या-क्या numbers available हैं. So the volume of the container was given to us in the first line. It's in the order of 10 to the power of -3. And the volume of the gas that we have calculated is in the order of 10 to the power of -7. So just to make a fair comparison, मैं circle लगा रहा हूँ. Container occupies volume in the order of 10 to the power of -3. And the total volume of all the gas molecules is in the order of 10 to the power of -7. Thousands of times का फर्क है ना, -3 versus -7. So thousands of times का फर्क है, maybe even more. So hence I've written down the following statement. Volume of the container is so and so versus volume of the gas is so and so. It appears that the volume of the gas is negligible as compared to the volume of the container. Hence, the nature can be considered as ideal. Okay, so we have compared the container's volume with the total volume occupied by all the gas molecules. And just comparing on the basis of 10 k powers, so it's a 10 to the power of -3 against a 10 to the power of -7. So, thousands of times ka fark hai, probably tens of thousands of times ka fark hai. So it appears that the volume of the gas is negligible as compared to the volume of the container. Consequently, the nature of the gas can be considered as ideal. ठीक है, मैं हाईलाइटेड चीजों को इरेज आउट नहीं कर रहा, इसको इसी तरीके से अपलोड कर दूंगा. सो गाइस मुझे 5 मिनट्स दे दो, मैं फिर आता हूँ जरा, इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है, सो आई विल स्टॉप फॉर 5 मिनट्स, फिर आता हूँ.
ऑल राइट यार, सो आगे की वर्किंग देख लेना। ठीक है, वर्डिंग देख लो। I'll directly start from part B. So in the question it says two cylinders A and B are connected by a tube of negligible volume as shown in figure 2.1. Initially the tap T is closed. The cylinders contain an ideal gas at different pressures. जरा pressure की values को पहले देख लीजिएगा, just to signify the fact that the values of the pressure are different. So in cylinder A, the pressure is at 3.4 times 10 to the power of 5. मैं थोड़ा सा इसको zoom in कर दूं. Whereas in cylinder B, the gas is at a much higher pressure, that is 4.9 times 10 to the power of 5. Acha, the information given to us is cylinder A has a volume of so and so. ठीक है, again volume convert करना पड़ेगा. Let me just write it down. So this will be the volume. This is in meter cube now, and contains gas at a pressure of so and so pascals, and the temperature is mentioned to be of 300 Kelvin. So these are the details given to us for cylinder A. And in the first part, they're asking us show that cylinder A contains these many moles of gas. So again, based on the numbers, you have the pressure, volume, and temperature. So for cylinder A, if you apply PV is equal to nRT, you have the numbers available, तो आप खुद बाद में plug in करके देख लेना. So the number of moles in this case works out to be 0.34. Let me mention this answer on the diagram as well. फिर यार सेकंड वाले पार्ट के अंदर the question states, wordings देख लीजिएगा. Cylinder B has a volume of this much. It contains 0.2 moles. And then the question says, when the tap is opened, the pressure of the gas in both cylinders reaches this value. No thermal energy enters or leaves the gas. Determine the final temperature of the gas. The first thing to recognize is the moment you open the tap, you would expect a transfer of gas to take place. And since B was at a higher pressure, मैंने टिक लगा दिया है, as compared to A, so होना ये चाहिए है कि your gas should transfer from a region of high pressure towards a region of low pressure. जो gas का transfer होगा आपके पास, that should be from B to A because B is at a higher pressure. So let me just write that down in the form of a statement before I start.
So when tap T is opened, gas will get transferred, in this case, from B to A until both systems are at the same final pressure, which was given to us as 3.9. I'm underlining that value times 10 to the power of 5. Now the question is asking us, क्या हमें final temperature की value को figure out करना है? तो based on the information that we have available, temperature can be worked out as shown over here. आप working देख लीजिएगा. पहले मैं details लिख लूं. So for the whole system, we have the following information. The pressure is given to us. Temperature हमें find out करना है. Number of moles आप diagram पर से देख लीजिएगा. The first cylinder contains 0.34 moles, and it was given to us that the second cylinder contains 0.2 moles. So we have the total number of moles as 0.54. And as far as volume is concerned, so the first cylinder has a volume of 2.5 times 10 to the power of 3 centimeter cube. The second cylinder has a volume of 1.6 times 10 to the power of 3 centimeter cube. So in terms of meter cube, I've written down the value for the total volume as well. उमर ने पूछा भाई 3.9 और 3.4 the final pressure. So उमर मैंने 3.9 लिखा हुआ है and I'm constructing an arrow ताकि तुम उस वैल्यू के साथ उसको मैच कर लो. Okay, so I have the final pressure. I'm interested in finding out the final temperature. Number of moles for the whole system have been worked out by adding the two values together. And the total volume have also been worked out by adding the individual volumes with each other. So volume मेरे पास addition से आ गया. Number of moles भी मेरे पास addition से आ गए. Temperature मुझे find करना है और pressure की भी final value मेरे पास है. हाँ मुस्तफा, जो तुम बता रहे हो वो भी सही है. But since मुझे number of moles question में given है ना, so I'm better off applying this formula. तो जरा working करना मुस्तफा convenient हो जाएगा. Because I have the final pressure given to me. I have worked out the final volume of the whole system by adding the individual volumes. I've worked out the number of moles by adding the individual moles. R भी मुझे पता है. So temperature का आंसर आपके पास आ जाएगा based on these numbers. So I'm writing down the final temperature. This should be the result. ठीक है, so मेरे लिए PV is equal to nRT use करना जरा ज़्यादा sensible था because I had the final pressure, it was given to me.
The final volume of the whole system was worked out by me by adding the two individual volumes. Number of moles को भी मैंने add up करके obtain कर लिया था. R तो constant था. Hence the value of temperature can be obtained. Okay, एक और question देख लेना before I conclude. आप wordings read कर लो. तो यार it says state what is meant by the term ideal gas. तो वो आप खुद कर लीजिएगा. B के अंदर भी it says a storage cylinder for an ideal gas has a volume of so and so. The gas is at a temperature of 23. I've done that conversion. And the gas has a pressure of so and so. So first part to direct हो जाएगा. Show that the number of moles amounts to this value. Formula apply करेंगे तो आपके number of moles का result आ जाएगा. Part 2 के अंदर it says the gas leaks slowly from the cylinder so that after a time of 35 days, the pressure has reduced by 0.4%. So gas leak हो रही है from the cylinder and 35 days later, the pressure has dropped by 0.4%. The temperature remains constant. Question is asking you, calculate the average rate. That is, ये calculate करना है. How many atoms per second are going to escape from the cylinder? So in a period of 35 days, the gas pressure has reduced by 0.4%. And they're asking us to work out the average rate, that is, how many atoms per second are going to escape from the cylinder. See? अच्छा पहला काम ये कीजिएगा before you start with the working, that do recognize कि based on the formula, रेड वाले टर्म्स को प्लीज देख लीजिएगा. Can you see all the green terms are constant? So the volume of the cylinder is going to be constant. Capital R is also constant. And the question says that the temperature also remains constant. So all the green terms are constant. So we can say that pressure is directly proportional to the number of moles. So since green wale sare ke sare terms constant hai, so volume of the cylinder constant, capital R also constant. And for the temperature, the question specifies that the temperature remains constant. अगर आप सारे constant terms को ignore कर लो, we can safely say that the pressure of the gas is proportional to the number of moles. So I guess इससे आप ये बात justify कर सकते हो. Hence, if pressure reduces by 0.4%, then number of moles must also decrease by 0.4%. So, based on this statement, we can conclude
that the number of moles which have escaped from the cylinder should be, let me just change the color. So the number of moles that have escaped from the cylinder should be 0.4% of 6.1 moles. तो अगर आप calculate करोगे just to find out exactly how many moles have escaped, then this result over here works out to be so basically the answer which I'm highlighting with the blue marker, this answer for the time being is telling us that in a period of 35 days, these many moles have escaped from the cylinder. So once I have this value कि 35 days के अंदर इतने number of moles have escaped. So the question was asking us to figure out the number of atoms that will escape per second. तो पहला काम यही कर लेना, ये number of atoms निकाल लेते हैं. So the number of atoms which have escaped is going to be equal to, once again, number of moles multiplied by Avogadro's constant. So the answer in green gives me the number of atoms which have escaped in a total of 35 days. So once I know कि यार कितने atoms escape हो रहे हैं in a period of 35 days, and the question was asking us कि आपको rate of escape निकालना था in atoms per second. So I think वो आप फिर मैं calculation दोबारा लिख लूं. So once I know the number of atoms that have escaped in a period of 35 days, so the rate of escape, that is atoms escaping per second, उसका ये result हो जाएगा. So it's 1.47 times 10 to the power of 22. This is the total number of atoms that have escaped over a period of 35 days. So atoms escaping per second ये हो जाएगा divided by, convert कर देता हूँ 35 days को. So that should be 35. Days को बेटा into 24 कर दिया, into 60 and into 60. See, so I first of all started my calculation by saying that since pressure and number of moles are proportional to each other, so if the pressure has dropped by 0.4%, then the number of moles must also drop by 0.4%. So I calculated 0.4% कितना होता है of 6.1 moles, and I got the answer as 0.0244 moles. So these many moles had actually escaped over a period of 35 days. So I multiplied the number of moles by Avogadro's constant to get the number of atoms that have escaped, and then to calculate the rate at which atoms are escaping per second, मैंने total number of atoms को time से divide कर दिया. ये रोहिल तुमने एक गलती कर दी है. तुमने लिखा है कि n will also decrease by 40% लिख दिया है ना, हालांकि वहां पर 40% के बजाय 0.4% था. बाकी तुम्हारा स्टेटमेंट सही है. So let me just zoom in before I conclude. और वो नंबर आई थिंक रोहेल देख लेना, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है. So the pressure was reducing actually by
नॉट 40% बट 0.4%. तुमने आंसर में स्टेटमेंट सही लिखा था, बट यू इंस्टेड टुक द वैल्यू एज 40% रादर देन 0.4. ठीक है गाइस, मुझे फाइनल आंसर जो है ना वो कुलसूम ने दे दिया है, तो माइट एज वेल लिख लेता हूँ बिफोर आई कंक्लूड. ठीक है, so the atoms escaping per second, that is the rate will be 4.9 times 10 to the power of 15 per second. Thank you कुलसूम. ठीक है गाइज, इसको अपलोड कर दूंगा फिर. अभी यहाँ पे यार क्लास को ओवर कर रहा हूँ. नेक्स्ट वाली क्लास से आई कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है जनाब, ओवर कर रहा हूँ. सही, खुदा हाफिज.